खवातीन के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की तमाम खवातीन के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के बावजूद अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक दिहाई के इक़्तिदार को मुस्तरद करके अवामी हुकूमत को इक़्तिदार में लाया है। उन्होंने कहा कि कई दिहाइयों की जद्दोजहद के बाद रियासत हासिल की गई, लेकिन जब हमने इक़्तिदार संभाला तो रियासत का निज़ाम बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि हुकूमत अब रियासत की अज़ सर-ए-नौ तामीर के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क की किसी और रियासत ने जिस अंदाज में सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती नहीं की, वो काम तेलंगाना हुकूमत ने किया है। सिर्फ एक साल में 60,000 मुलाजमतें फराहम की गई। सरमायाकारियों के जरिए 1 लाख अफराद को बराह रास्त रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के एतमाद को बहाल किया गया है और यंग इंडिया स्कूल्स के जरिए तलबा को महारतों की तरबियत दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क भर में करोड़ों नौजवान होने के बावजूद ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल न आना तकलीफदा बात है। SP Ibrahim Patnam. S. Suresh Arai is the contingent commander. Shri Syed Basha is the commandant of this unit. We can see the contingents waiting for the arrival of the inspection vehicle. A close deco of Honorable Chief Minister. Today is the day and date they would also register forever. Third contingent, that is 12th Battalion. The contingent commander is V. Thurupati, Reserve Inspector. इंस्पेक्शन वाहन 4th कंटिजेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए एसपीएफ हैदराबाद, जिसके कंटिजेंट कमांडर है श्री बी राजू, इंस्पेक्टर. Slowly, beautifully glides the inspection vehicle. There we have the media vehicle trying its best to capture every second, not to miss a second of the historic moment. ఎస్పీఎఫ్ డీజీ అనిల్ కుమార్ ఐపీఎస్ గారికి అలాగే కమాండర్ త్రినాథ్ గారికి శుభాకాంక్షలు. ఎస్పీఎఫ్ కంటింజెంట్కి బి రాజు గారు కంటింజెంట్ కమాండర్గా ఉన్నారు. తర్వాత మహిళా శక్తికి ప్రతీకగా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం. మహిళా పోలీస్ బృందం Commander is S. Rajesh. Marching smart, the crisp uniform, the kamarband, taking the whole world into this ride. They take pride. They also take home the memories of their participation as Telangana celebrates its history, Telangana Formation Day. Close to them is contingent number 2, that is 3rd Battalion, Ibrahim Patnam. ఈ అందమైన దృశ్యాన్ని చూస్తూ మైమరిచిపోతున్నారు, చప్పట్లు కొట్టడం మర్చిపోతున్నారు. మరి క్రమశిక్షణకు, విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణకు, ఉన్నతాధికారుల ఆజ్ఞ శిరసావహించేందుకు గడియారంతో పోటీ పడుతూ పనిచేస్తూ వ్యక్తిగత సౌఖ్యాన్ని, కుటుంబ సౌఖ్యాన్ని పక్కకు పెట్టిన పోలీసులకు మనం ఎంత చేసినా తక్కువే. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. ఒక్కమారు గట్టిగా కరతాళధ్వనులతో వారిని. Close to the saluting dice was contingent number 2, 3rd Battalion, and contingent commander was Ravinder. And contingent number 3 gets closest to the saluting dice. And the contingent number 3 is 12th Battalion, Annaparthi. V. Tirupati RI is the contingent commander. Look at their headgear, their weapon, and the kamarband, adding beauty, valor, and pride to the air of the parade ground, the historic